Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are in your good health. So in this video we will discuss about the concept of digit sum, where we can use the concept of digit sum, how we can use and to get the answer accurate and especially in the less time. So without wasting any time, let's start the video. So these all are random numbers. अब होता क्या है digit sum? First of all, the digit sum means after adding all the digits, हमें digits, not a number, like after adding all the digits, अगर हम इनके बीच में plus लगा दें, these all are random digits, like 6 2 starts with and 7 3 and 5 4, these all are random digits. अब अगर हम इन्हें add करेंगे, so there are two methods to add them. One is the basic and one is the advanced, which I am going to tell you how to add these numbers. और कैसे फिर ये हेल्प करेंगे आपके क्वेश्चंस में, इक्वेशंस में, वो भी मैं आपको बताऊंगा. So first of all, the basic method is to normally 6 plus 2 8, 8 plus 8 16, 16 plus 7 is 23, and then 23 6 plus 2 8, 8 plus 8 16, 16 plus 7 is 23, 23 plus 6 is 29, 29 plus 1 is 30, 30 plus 3 is 33, 35 and 1 is 36. We get 36. 36 means 9. Right? We get 9. Okay. Now next, 7 plus 3 is 10, 10 plus 6 is 16, 16 plus 3 is 19, 19 plus 8 is 27, 27 plus 2 is 29, 29 plus 7 is 36, 36 plus 3 is 39, 39 plus 8 is 47. And 47 means 7 plus 4 is 11, 11 and 11 plus 2 is 1 plus 1 is 2. So we get 9 in this, 2 in this. Okay, fine. Now next, just a second. Yes. Now 5 plus 4 is 9, 9 plus 8 is 17, 17 plus 3 is 20, then 29, then 29 plus 1 30, 36, 39 and plus 7 is 47. So we get 47 is the answer. So 39 plus 46 we get. 46 please, 6 plus 1 10, 6 plus 4 10 and 10 means 1 plus 0 is 1. So we get 1. So this is the basic method. Now how to find the digit sum in advanced method? आपको ट्राई करना है कि कोई ऐसे डिजिट्स लीजिए आप, चाहे either it is single digit or 2-3 digits आप लो या 3-4 लो, to get 9 आपको किसी तरह 9 बनाना है. जैसे कि फॉर एग्जांपल 6 and 3 9, और जैसे ही 9 बन जाएगा आप उसे कट कर दीजिए, लाइक भूल जाइए कि यहाँ पे कोई 6 और 3 था, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट. सेकंड 7 और 2 9, आपका डिजिट सम वही आएगा जो आ रहा है, या तो 9 आएगा, लाइक 9 नहीं आएगा 0 आएगा, बिकॉज डिजिट सम के एडवांस मेथड में 9 का मीनिंग होता है 0. और सेम आएगा, हम देखेंगे अभी 7 to 9, 8 plus 1 9, 6 7 8 और 1 9, एंड 9 का मीन्स 0, 9 का मीन 0 डिजिट सम. अभी हम चेक करेंगे कि कैसे 9 का मीन 0 है और कैसे वो हमें हेल्प करेगा. पहले हम देख लेते हैं कि आंसर एक्यूरेट आ रहा है विद द बेसिक एंड एडवांस मेथड. Then 6 and 3 9, 7 or 2 9, then 7. Okay, there is nothing else. Is there anything else? No, there is nothing else to make the 9 up. So okay, 8 and 3 is 11, and this is also 11, 11 11 22, 22 plus 7 is 29, 29 means 29, 9, 10 11, 9 plus 2 is 11, 11 plus 2 is 2, we get 2. Okay, now let's come to the third one. 5 plus 4 9, 8 plus 1 9, again cut 9, then 6 and 3 9, and 7 and 3 10, 10 means again 10 and 1, we get 1. So it means एडवांस मैथड से हमने थोड़ा जल्दी एंड फास्ट निकाला डिजिट सम. अब इस डिजिट सम का यूज कैसे करना है, आई होप कि आपको नहीं आ गया होगा. अगर लाइक इज इट क्लियर फॉर यू, आई होप सो. इफ इट इज नॉट क्लियर देन यू कैन जस्ट रिवाइंड द वीडियो easily and you can ask me in the comment box also. So how we can solve and where we can use this digit sum. अब is 6 a factor of the following? क्या 6 इन दोनों के फैक्टर्स
इन दोनों का फैक्टर्स है या नहीं, हमें ये पता करना है। तो 6 किसका फैक्टर होता है, कैसे पता चलता है कि 6 एक पर्टिकुलर नंबर का है, कि बेसिक हमें ये बताता है कि 6 एक नंबर का फैक्टर है या नहीं। उसके लिए उस 6 उस पर्टिकुलर नंबर को 2 और 3 के फैक्टर्स होने चाहिए। मतलब ये नंबर 2 और 3 का फैक्टर है तभी ये दोनों 6 के फैक्टर्स हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट की बात करें तो ये फर्स्ट वाला 2 का भी फैक्टर होना चाहिए एंड 3 का भी फैक्टर होना चाहिए, दोनों का, both, then only that particular number, first number is a factor of 6, तभी वो 6 का फैक्टर। okay, अब 2 का फैक्टर है या नहीं, it's very easy for everyone कि like in the at the end like unit digit is even number, it means that particular number is a factor of 2। तो 2 का तो easy है, आपसे एग्जामिनर कभी भी 2 की रिगार्डिंग तो क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। उसने आपसे पूछा भी ये क्वेश्चन इसीलिए है कि आपको पहले तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल आता है या नहीं, बिकॉज 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि आप सबको ऐड करिए, सारे डिजिट्स को ऐड करिए एंड दैट पर्टिकुलर नंबर जो ऐड करने पर आया है, द डिजिट सम is in the factor of it is a factor of 3, then particular number, तब ये नंबर भी फैक्टर होगा 6 का, अगर ये 3 की डिविजिबिलिटी में आता है इन पूरे नंबर का डिजिट सम। तो ओवरऑल हमें डिजिट सम निकालना है, बिकॉज 2 से तो दोनों नंबर कट होंगे, तो 2 के तो फैक्टर्स हैं, 3 के फैक्टर्स पता करने के लिए अगेन डिजिट सम मेथड यूज करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो 3 + 4 + 0 + 9 ऐसे करेंगे, बट दिस इज द बेसिक मेथड, डोंट यूज दिस मेथड, ट्राई टू अवॉइड दैट मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल 9 कट हुआ, 4 5 6 7 8 and 1 9, again 9 cut हुआ and we have 3, so write 3 here। अब 3 क्या 3 का फैक्टर होता है, बिल्कुल, yes, 3 1s are 3, so that particular number is also a factor of 6, क्योंकि 2 का तो पहले से ही था because of this even number, और 3 का भी हो गया है, तो that particular number is a factor of 6। और वो आपसे सिर्फ yes or no पूछेंगे, obviously they ask you, like examiner ask you yes or no, is it a factor or not, it's not a factor। Again, second number, it's a factor of 2. Yes, now we have to find the factor of 9 or not. So 7 or 2, 9, 8 or 1, 9. Now we get 1. 1 is a factor of 3? No, 1 is not a factor of 3. Like 1, 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये नंबर भी नहीं आएगा। This number also not come in the table of 6। अगर आप डिवाइड करेंगे by the basic method या फिर digit sum से भी आप करेंगे या किसी और मेथड से, तो आपको पता चलेगा कि ये 17218 6 की टेबल में नहीं है। I hope it is clear for you. Now एक और थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चलते हैं, इसी के आगे one more advanced level. Now 9 is a factor of a following number. Is 9 a factor? We have to find it कि 9 factor है या नहीं। So how to find it? Again 9 की भी divisibility rule ये होता है कि अगर कोई नंबर का आप एडिशन कर रहे हो, डिजिट सम निकाल रहे हो, आफ्टर like getting the digit sum of that particular number, अगर वो नंबर 9 का फैक्टर है, जो डिजिट सम है, डिजिट सम अगर 9 का फैक्टर है, so that particular number comes in the table of 9। if there is like digit sum is not the factor of 9 तो नहीं होगा। तो ओवरऑल हमें ये क्वेश्चन भी डिजिट सम से करना है। यहाँ पे सिर्फ मोटिव ये है कि डिजिट सम एक्यूरेट भी आए और जल्दी भी आए, we get the digit sum fast and accurate, this is the motive for these type of questions। हम सेकंड पार्ट में इसके भी एडवांस लेवल पे जाएंगे, लाइक 6 का फैक्टर, 9 के फैक्टर एक बेसिक क्वेश्चन है, आई नो, बट स्टिल इसमें टाइम लगता है, और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्जाम्स में आते हैं, like these type of questions come in the competitive exam। ये ऐसा नहीं होता कि ये किसी भी ईयर नहीं आए, yes it will come। बहुत सारे लास्ट ईयर से हमने पेपर जो देखे हैं किसी भी आप, और ये रैंडम क्वेश्चंस ऐसे नहीं है कि मैंने अपने आप क्वेश्चन बनाया, I've taken these questions from the RS अग्रवाल, not from any other, like I made this question by myself कि options उस हिसाब से put करूँ, no, like these are random questions। Now in the next video we will discuss about some more concept। हम इसके बाद सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक, सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस इसी डिजिट सम से फास्ट करने की ट्राई करेंगे, डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल 9 का फैक्टर है या नहीं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 9 कट, 6 and 3 9 cut, 8 plus 4 9 10 11 12, 8 plus 4 12, 12 plus 3 is 15, 15 means 6, 5 plus 1 6, so 6 is a factor of 9, no, 6 is not, 6 will not come in the table of 9, so इसलिए ये नंबर भी 9 से कट नहीं होगा। 7 और 2 9 अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ, आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग, आराम आराम से हो रहा है, इसलिए थोड़े से और सेकंड्स ज्यादा लग रहे हैं, अदरवाइज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस लाइक दिस मेथड, दिस कांसेप्ट विल हेल्प यू to find the answer within 10-15 seconds hardly। 7 plus 2 9, 5 plus 4 9, 8 1 9 and 6, again 6 आया, 6 is a factor of 9, no, so ये नंबर करें। then 5 plus 4 9, then after then 7 plus 2 9,
5 6 7 8 एंड 1 9। यहाँ पे क्या आया, जीरो आया। और मैंने आपको क्या बताया था कि जीरो मींस मैथ्स में जीरो, इसमें डिजिट सम में जीरो का मींस होता है 9, और 9 तो 9 का फैक्टर होगा, राइट। सो इट मींस दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 9। तो यहाँ पर इन तीनों में एक ही नंबर है जो डिविजिबल है 9 से। और आप देखेंगे हमने तीनों नंबर हार्डली 1 मिनट में तीनों नंबर, तीनों के फैक्टर्स पता कर लिए, डिजिट सम पता कर लिया। लाइक एक क्वेश्चन में हमें हार्डली 10-15 सेकंड्स लगा, और वो भी एक्सप्लेनेशन। So I hope ki it's clear for you. If it is not clear to you, you can rewind the video, and in the next video, in the part 2 of the digit sum, we will discuss about some difficult questions, some very important questions. Okay, thank you. Bye bye.